Replacement of furniture and other domestic item. If a tenant has been provided with some furnished items, these furnished items may be replaced from time to time. So the cost of replacement is allowable expense. एक किराएदार को अगर कोई फर्नीचर वगैरह या डोमेस्टिक आइटम्स दी जाती हैं साथ में रेंट पे, तो ऐसी सूरत में इन आइटम्स को टाइम टू टाइम रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है. तो रिप्लेसमेंट के हवाले से जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, दीज आर सेड टू बी अलाउएबल. रिमेंबर, फर्स्ट टाइम जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक्सपेंसेस फर्नीचर एंड डोमेस्टिक आइटम, उनकी कॉस्ट कभी अलाउ नहीं की जाती एज रिलीफ. आपके पास सिर्फ रिप्लेसमेंट की कॉस्ट अलाउ की जाती है. सेकंड, इफ़ द फर्स्ट एसेट दैट इज़ टू बी रिप्लेस्ड, लाइक वॉशिंग मशीन रिप्लेस की जा रही है, तो इन दैट केस द नेट डिस्पोजल प्रोसीड ऑफ ओल्ड मशीनरी, ओल्ड वॉशिंग मशीन वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ न्यू वॉशिंग मशीन. आपके पास पुरानी वॉशिंग मशीन को सेल करने की जो नेट डिस्पोजल प्रोसीड है, वो नई वॉशिंग मशीन की कॉस्ट में से लेस कर दी जाएगी और रिमेनिंग अमाउंट को रिलीफ के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा. इफ़ द ओल्ड मशीन इज़ सोल्ड फॉर $100 and the new machine is purchased for $600, then it is amount of $500 which is allowed as relief, right? And further one thing, it is only the replace item is allowed as relief if it is as per the previous standard. Means कि जो original जिस standard की चीज़ थी, उसी standard की चीज़ अगर replace की जाए तो तब वो relief के तौर पे allow की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन दिस केस अगर एक वॉशिंग मशीन की जगह वॉशर ड्रायर प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन है कि जिसे आप अलाउएबल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, रिलीफ ट्रीट करेंगे. ड्रायर की कॉस्ट रिलीफ ट्रीट नहीं होगी. सो नाउ नो रिलीफ इज़ गिवन फॉर इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फर्नीचर इन लेट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी जो किराए पे दी है, उसमें अगर इनिशियली कोई फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है तो उसकी कॉस्ट अलाउ नहीं की जाती है एज रिलीफ. Relief is however given if an item of furniture is replaced. This is known as replacement of domestic item relief. The relief is for range of domestic items that include furniture, furnishing, household appliances and kitchenware. But it does not apply to fixtures which become part of the property, like for example radiators. The amount of relief is the expenditure on the new replacement asset less any proceed from selling the old asset. जो ओल्ड एसेट रिप्लेस करने की सेल प्रोसीड है, उसे न्यू एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दिया जाता है. प्लस एनी इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट, मीन्स आपने नेट डिस्पोजल प्रोसीड कंसिडर करनी है. इफ द न्यू एसेट इज नॉट द सेम और सब्सटेंशियली द सेम एज द ओल्ड एसेट, ओनली द कॉस्ट ऑफ द इक्विवेलेंट एसेट इज गिवन एज रिलीफ. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सिंगल बेड की जगह डबल बेड प्रोवाइड किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ सिंगल बेड ही आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगी. नाउ क्वेश्चन, अमल ओन्स अ कॉटेज दैट शी लेट्स आउट फर्निश एट एन एनुअल रेंट ऑफ 3600 पेबल मंथली इन एडवांस. शी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर: रिप्लेसमेंट बेडरूम कर्टेंस फॉर $150, replacement of one broken kitchen unit in a fitted kitchen with a unit of similar standard, and insurance for the year from 5th July 22 480. बता रहे हैं ये कि प्रीवियसली ईयर में 420 की इंश्योरेंस पे की गई थी. तो इट डजेंट मैटर. वाई सो? बिकॉज वी आर टू फॉलो कैश बेसिस, और कैश बेसिस पे ये नहीं देखा जाता कि पिछले साल का रेंट कितना था या पिछले साल की इंश्योरेंस कितनी थी, इस साल की इंश्योरेंस कितनी है. वी हैव टू कंसिडर ओनली वन थिंग, दैट व्हाट इज़ द अमाउंट दैट इज़ पेड इन दिस करंट ईयर. एन अमाउंट पेड इज़ एर 480. डिश वॉशर फॉर 380. एंड इन May 23 redecoration work completed in March 23. So as we are paying in May 23, it means that this expense is not allowable. Although the expense is incurred for the work completed in March, तो accrual basis पे तो उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन कैश बेसिस पे नहीं. The tenant had vacated the property during June 22 without having paid the rent due for June. Amal was unable to trace the defaulting tenant but managed to let the property to new tenant from 1st July 2022.
द न्यू टेनेंट पेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 800। तो ये है कि उसने नई पर्सन को प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी 1 जुलाई को, उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया 800, बट दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर प्रॉपर्टी इनकम। वाई सो? जनरली इट इज़ रिफंडेबल। द ओल्ड बेडरूम कर्टन्स हैव नो डिस्पोजल वैल्यू, सो इसलिए ये आपके पास 150 की अमाउंट ही अलाउेबल एक्सपेंस है। अ डिश वॉशर हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन प्रोवाइडेड इन द प्रॉपर्टी, तो डिश वॉशर की कॉस्ट आपके लिए अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। अमल ड्रोव 120 माइल्स इन हर कार इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी बिजनेस। प्रॉपर्टी बिजनेस के हवाले से उसने रेंट रिसीव करने के लिए शायद 120 माइल्स का ट्रैवल किया इन द टैक्स ईयर 22-23। सो शी इज़ क्लेमिंग HMRC approved mileage allowances which we have studied earlier. So calculate the property income for the tax year 22-23. So first of all we have to record rental income. And we have to record a rental income for 11 months क्योंकि 1 महीने का रेंट टेनेंट ने पे नहीं किया था. So we are receiving a rent for 11 months. So that is why we are recording it as 3300. And then allowable expenses. First is 150 of curtain replacement. Then is replacement of one broken kitchen. This is also allowed, 275. Then 480 of insurance cost. And then we have dishwasher, but dishwasher is not provided earlier. It was first time provided, so cost of dishwasher is not allowed as relief, but you have to mention it. This is the presentation that you have to mention. If anything has no effect on the property income or expense, you have to record this and mention it as 0. Same is the case of redecoration work, because this work is completed in March but paid in May, and as we are following the cash basis, so it will be recorded as 750. Sorry, 0. And last one, we have to consider the mileage allowance. Mileage allowance, she has traveled 120 miles and entitled to a 45 penny per mile. Remember, there are 100 penny in a pound, so that is why we are taking this as 0.45, so it is 45. So it will be total 480, 630, 830, 905, 959. So 959 of total expenses will be deducted from 3300, and it will give you an income of 2341. That is said to be assessable property income. Another question: Eastleigh acquired 2 residential properties on 1st June 2022 that were first let on 1st July 22. Property is let unfurnished for an annual rental of 4,000, payable quarterly in advance. Eastleigh incurred the following expenditure in respect of the property: repairs on 15 June 1600, interest on loan to acquire property 420, and repainting exterior 845.
So this is the information about property A. Now property B. Property B is let furnished for an annual rent of 5,000 payable quarterly in arrears. The tenant was late in paying the amount due on 31st March. This was not received until 15th April 23. Easily incurred the following expenditure in respect of this property: letting expenses paid to agent 40, insurance 585, cost of furniture 2000 and cost of soft furnishing 500. Calculate Eastleigh's properties income for the tax year 22-23. So first we need to consider about property A. In property A, the amount is of rent is 4,000. Allowable expenses are in case of property A, this is repair as pre-trading expenditure. We have considered that point that pre-trading expenditures are allowable expenses. Second, interest would not be considered here. Why so? Because the question is about the property income, not about the tax liability. आपके पास इंटरेस्ट का 20% एज टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूसर यूज़ होता है और यहाँ पे हमें टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम बतानी है. सो इसलिए इंटरेस्ट की कोई ट्रीटमेंट नहीं है. रीपेंटिंग एक्सटीरियर 845 अलाउबल एक्सपेंस है, 1 फरवरी 23 को किया गया है. सो इट इज़ अलाउबल. Amount is 845. So total 2445 expenses are allowable. So assessable income for property A is 1555. In case of property B, the total amount to be received is 5,000. But what we have received only 3 quarters income. Means 3750, as fourth quarter income is not received by 15th April 23. So कैश बेसिस पे कैलकुलेट करते हुए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. 3750 प्रॉपर्टी बी की इनकम है. रेंटल इनकम. अलाउबल एक्सपेंसेस में वी विल कंसिडर लेटिंग एक्सपेंसेस 40, इंश्योरेंस फॉर द ईयर 585, बट वी वोंट कंसिडर cost of furniture and cost of soft furnishing. These are first provided, so these are considered to be not allowable as relief. So 40 and 585, these expenses are allowable. In total this comes as 625, and your assessable income for property B would be 3125. Now about property business losses. Property business losses can be carried forward for indefinite period to be set off against the future property income. और अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो तो फिर तो इजी है कि पहले आप एक प्रॉपर्टी का लॉस उसी साल की प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं. सो इफ रेंटल इनकम इज लेस देन द अलाउबल एक्सपेंडिचर, दिस इज सेड टू बी लॉस. If the landlord owns more than one property, then profit and losses on all properties are aggregated to calculate the assessable income. उन्हें इकट्ठा करके लिखा जाता है. Effectively provide instant loss relief because एक प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाता है. If there is an overall loss on all properties, then the property income assessment for the tax year is considered as nil. अगर आपके पास सारी प्रॉपर्टी से ओवरऑल लॉस हो रहा है तो उसे फिर nil लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे. And any unrelieved loss is carried forward indefinitely and is offset against the first available future property business profit. Now for this, Fiona owns a property that she has let furnished on a short term basis for a number of years. The following information relate to the tax year 22-23. An important question, this is a detailed question.
Fiona's total property income after deduction of allowable expenses is 9,900. This was before taking account of her mortgage prepayment, which amounted to 2,500, consisting of 2,000 of interest and 500 of capital payment. We won't consider the capital repayment, but the amount of interest paid by Fiona would be considered as tax liability reducer. So 2000 का 20% इसकी tax liability को कम कर देगा. The property was let out on a monthly rental of 1,000 payable on 6th of each month. The rent due on 6th March was not received until 6th April 22. So we have to consider whether to use cash basis or we have been given specifically the accrual basis. ये बात देखते हुए फिर हमने इसका solution करना है. Third point, Fiona had received a security deposit of 500 from a tenant when she let the property in January 22. We already considered this point that security deposit is not included in property income. The tenant left the property on 5th January 23 and at the end of the letting period. On that date, Fiona used 200 of the deposit to pay the cleaning the property and repaid the remaining 300 to departing tenant. She then let the property again on 6th January 23 and received a security deposit of 600 from the incoming tenant. This amount was still held as a deposit by Fiona at 5th April 23. Fourth point, Fiona disposed of an old washing machine for £25 and replaced it with a new washer dryer at a cost of 550. The cost of new washing machine equivalent to the one she disposed of would have a cost of 330. So what we have to give as relief, this is the cost of new machine 330 minus sale proceed of old washing machine 25. 305 is a amount of relief. Fiona traveled 1000 miles in her car in relation to letting the property. Fiona wants to know what the income tax liability on her property income is for the tax year 22-23. That is an addition of her income tax liability on her other income. Her other taxable income, all non-saving, is of 50,000, and for the tax year 23-24, Fiona is considering using the accrual basis. So we have been given that we have to specifically use the accrual basis. Fiona may incur substantial allowable expenditure on refurbishing the property in the tax year 23-24, which would result in a property business loss. The property will then generate a profit in subsequent tax year. Fiona wants to know how the loss could be used. So loss can be used to set up the future year's profit. So requirement is, what is the Fiona's additional income tax liability? What is the Fiona's additional income tax liability for 22-23 on her property income? So we have to consider her property income for 22-23, and for this we have to calculate and consider the rules, but we have been given Fiona's total property income after deduction is amounting to 9,900. So what we have to consider that 9,900 multiplied by 40% will give you a tax liability of 3,960. Remember, they have asked for the additional tax liability. You don't have to consider the tax liability with respect to non-saving income. You have to consider the tax liability with respect to the property income. And their question is also about the property income. What is Fiona's additional tax liability for 22-23 on her property income? So हमें सिर्फ property income को consider करना है. ये आ गई 3,960. बट यहाँ पे उसने एक इंटरेस्ट पे किया है 2000, जिस पे 20% उसे रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, एंड इट वुड बी 400. सो आफ्टर दिस द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड एज हर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी ऑन प्रॉपर्टी इनकम वुड बी 3,560. Remember, this 40% is because her other income is non-saving income is 50,000, which lies on higher rate band. So इसलिए हम प्रॉपर्टी इनकम को भी higher rate band पे ही ट्रीट करेंगे. Next question is, what was the amount of income received when Fiona computed her property income for 22-23? So what was the amount of income computed by her?
So here we need to consider that the property was let out on a monthly rental of 1000 payable on 6th of the each month. The rent due on 6th March 22 was not received until 6th April 22. So 22, this was about previous year, the tax year 21-22. हम बात कर रहे हैं 22-23 की. So 22-23 में we have to follow the cash basis. Although in question they have mentioned that she need to use the accrual basis, but it is for tax year 23-24. हम तो भी 22-23 के टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने कैश बेसिस यूज़ करनी है क्योंकि अबाउट दिस ईयर दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग, और जब कोई चीज़ मेंशन ना हो तो हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं. सो 22-23 में हम पूरे साल का रेंट रिसीव करेंगे क्योंकि हर रेंट हम 6 अप्रैल को रिसीव करें. 6 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 12 मंथ का रेंट तो ये रिसीव करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस the rent that belongs to the previous year that should have been received on 6th March 22 वो हमने रिसीव नहीं किया था अप टू 6 अप्रैल, यानी वो भी हम इस साल रिसीव करेंगे. सो द टोटल रेंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड एज 13,000. कैश बेसिस के हवाले से इस साल जो आपके पास 12,000 का आपने रेंट रिसीव करना था वो आपकी इनकम है, प्लस जो प्रीवियस ईयर के हवाले से आपने रेंट रिसीव नहीं किया था in the previous year would be received in the current year, and which it also will included as your rental income. Now about security deposit. Normally security deposit is not considered as your income, but in this question they have mentioned that she has received a security deposit of 500. That tenant left the property on 5th January 23 at the end of the letting period. On that date Fiona used 200 of the deposit to pay the cleaning the property and repaid the remaining 300. So whatever she has used is said to be her income. जो security deposit उसने खुद यूज़ किया है that is considered her as her income. Remaining 300 जो उसने वापस कर दिया वो income नहीं है. So total security deposit normally whenever is received, whatever is received is not considered. But अगर रिटर्न करते वक्त हम उसमें से कुछ अमाउंट एज अ लैंडलॉर्ड यूज़ कर लेते हैं तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी इनकम कंसिडर की जाती है. तो हेयर शी हैज़ यूज 200 ऑफ डिपॉजिट टू पे द क्लीनिंग द प्रॉपर्टी, सो इट मीन्स दिस 200 इज़ यूज बाय दैट person, so her total income would be considered as 13,200. So that is the amount of income received when Fiona computed her property income for 22-23. So years को carefully consider करना है. ज़रा सी गलती अगर आप कर दें तो आपके पास आपका आंसर चेंज हो जाएगा. तो अगर आप केयरफुली रीड करें तो आपको पता चलेगा कि दैट इज़ एक्रूल बेसिस to be used in 23-24, not in 22-23. Third, what was the total amount of expenditure paid in respect of the new washer dryer in 4 and the use of Fiona's car in 5 that was deducted when Fiona's computed her property income of 22-23. So we have already discussed that point that the cost of new washing machine is 330 and the sale proceed of old machine is 25. So it is 305 of amount that will be recorded as or allowed as relief. While in case of mileage, how much she has traveled? She has traveled in 5th point 1000 miles. If she has traveled 1000 miles, then 1000 multiplied by 45 pennies and it will give you 450. So this is the total amount 755 that should be deducted while computing her property income. Next, which two of the following statement about the use of the accrual basis by Fiona in the tax year 23-24 are correct? First point is, under the accrual basis, Fiona will compute property income using rent receivable less expenses payable. Absolutely right. This is true because accrual basis पे हम ये देखते हैं कि what is the amount of rent receivable and what is payable और उनको deduct किया जाता है. B, under the accrual basis, Fiona will be able to deduct the whole of her finance cost from her property profit. So that is wrong because Fiona will be able to deduct the whole of finance cost. Finance cost आपकी deduct नहीं की जाती. ये हम आगे पढ़ेंगे कि furnish holiday accommodation के सिलसिले में ये deduct की जाती है. वैसे
फाइनेंस कॉस्ट हमेशा टैक्स लायबिलिटी रिड्यूसर है। Fiona must use the accrual basis if her property income under the cash basis exceed 1,50,000 in that tax year. So this is also true because this is the rule कि अगर आपकी cash basis income 1,50,000 से ज़्यादा है तो you have to use the accrual basis. So fourth one will be wrong. Fiona can elect to use the accrual basis and must so by 31st January 2025. So हमने इसके हवाले से रूल क्या पढ़ा था 22 months after का। Remember again carefully आपने consider करना है, they were asking about year 23-24 और 23-24 का जो year है that will be ended on 5th April 24 और 5th April 24 के 22 months के बाद का period 31st January 26 आता है, 31st January 25 नहीं। हमें consider ये करना है कि tax year के बाद 22 महीने का period। So आपके पास 23-24 का tax year end हो रहा है, कब एंड हो रहा है 5th April 24 को, तो आफ्टर 22 months इट विल बी 31st January 26. Complete the following sentences about how Fiona could use a property business losses for 23-24. Fiona can use a property business losses for 23-24 against income in the tax year. Against it would be property income in the tax year 23-24, 24-25. Now it is about premium received on grant of short lease. आपके पास short lease कहते हैं कि जो period आपके पास 50 years से कम हो lease का period. Premium is said to be a lump sum amount that is received in advance from the tenant. A premium is a lump sum payment made by the tenant to the landlord in consideration for granting of lease. क्योंकि उसे लीज दी जा रही है तो उसके लिए जो lump sum payment करता है tenant, that is said to be premium. The grant of a lease is where the owner of the property gives the tenant exclusive right to use the property for a fixed period of time. तो जहाँ पे एक exclusive right दे दिया जाता है from landlord to tenant, उसके बदले जो amount receive की जाती है that is grant of lease. A short lease is a lease for a period of less than or equal to 50 years. तो यहाँ पे आपके पास जो amount accessible है as property income of landlord that can be calculated by these two formula. Either you have to record premium and again premium multiplied by 2% multiplied by n minus 1. N here stands for number of year of lease period. So इस फॉर्मूले के मुताबिक आप ये प्रीमियम की अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, यू विल फाइंड द अमाउंट. या फिर दूसरा फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं कि प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस n डिवाइडेड बाय 50. So let's check it with the help of an example. Vakana granted a 21-year lease to Charles on 1st July 22 for a premium of 10,500. Calculate the amount assessable on Vakana's as property income in the tax year 22-23. Right? So यहाँ पे हम अगर फर्स्ट फार्मूले को अडॉप्ट करें तो प्रीमियम रिसीव्ड इज 10,500 एंड देन आपने उस 10,500 को 2% से मल्टीप्लाई करना है एंड देन मल्टीप्लाई बाय n. n यहाँ पे लीज पीरियड है दैट इज 21 माइनस 1. सो इट विल बी so it is 4200. So 10,500 में से 4200 लेस कर दें तो it will be 6300. You can directly calculate with the help of second formula, that is 10,500 premium multiplied by 51 minus 21 divided by 50. So it will be 10,500 multiplied by 30 divided by 50 and again you will find this as 6300. तो आई सजेस्ट आपके लिए सेकंड फार्मूला लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसे यूज़ किया जाए. नाउ इट इज़ अबाउट फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग. अकोमोडेशन काउंट एज अ फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग इफ़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई. पहली बात यह है कि फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन जो है वो कहलाएगी कि जो
पब्लिक के लिए 210 डेज़ के लिए अवेलेबल टू लेट आउट हो और 105 डेज़ लेट आउट भी हो। और अगर एक लैंडलॉर्ड की मोर देन वन प्रॉपर्टी या होटल्स हैं तो फिर एवरेज बेसिस पे 105 डेज़ होने चाहिए। और लास्ट बात यह कि लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन 155 डेज़ से ज़्यादा ना हो। लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन कहते हैं 31 डेज़ अगर एक ही गेस्ट स्टे कर रहा है। सो नाउ विल कंडीशन रीड द कंडीशन। It is available for commercial letting to the public for no less than 210 days in each tax year. It is actually let for at least 105 days. If a taxpayer owns more than one furnished holiday accommodation, this condition can be satisfied based on the average number of days that each property is let. Tenants do not stay for a period of more than 31 days. This period is known to be long-term occupation. However, the property can be let to the same tenant for a period longer than this, provided these long lets do not take up more than 155 days per tax year. यानी ये जो लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन है ये 155 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Another important point to note that it is located in UK or in the European Economic Area. Advantages FHL के finance costs are not restricted. दे आर फुली डिडक्टेबल। तो याद रखना है आपने कि इफ़ इट इज़ अ केस ऑफ फर्निश हॉलीडे लेटिंग देन फाइनेंस कॉस्ट टैक्स रिड्यूसर नहीं है बल्कि फुली डिडक्ट की जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फर्नीचर इज़ डिडक्टेबल व्हेन इनकर्ड और अंडर द एक्रूअल बेसिस कैपिटल अलाउंस आर अवेलेबल इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट बेसिस। तो रिप्लेसमेंट बेसिस की जगह ये आपके पास फर्नीचर फुली डिडक्टेबल है कैश सिस्टम में और एक्रूअल सिस्टम में कैपिटल अलाउंस दिया जाता है। Income is treated as earned income and so qualifies as part of relevant earning for pension contribution. इनकम जो भी आप इससे अर्न करते हैं वो आपकी अर्न इनकम है और ये फिर क्वालिफाई करती है कि इसे आपकी रेलेवेंट अर्निंग कंसिडर किया जाता है पेंशन कंट्रीब्यूशन के हवाले से, विच वी विल कंसिडर इन द चैप्टर ऑफ पेंशन। कैपिटल गेन टैक्स, रोल ओवर रिलीफ, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ, गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ आर ऑल अवेलेबल ऑन एनी सब्सिक्वेंट सेल ऑफ प्रॉपर्टी. So reliefs will be considered quite later on. These are the types of relief which are available in case of FHL. Last is rent or room relief. If an individual lets furnished accommodation in his or her main residence and the income is liable to tax as property income, a special exemption apply. As for other property income, the cash basis is the default basis and should be used in the examination unless specifically stated to the contrary. तो आपके पास इसमें भी कैश बेसिस को ही आपने कंसिडर करना है। यहाँ पे आपके पास दो मेथड हैं जिनके तहत आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेथड 1 इज सेड टू बी नॉर्मल असेसमेंट, जिसमें जो भी आपकी रेंटल इनकम है उसमें से रेंटल एक्सपेंसेस लेस कर देना। और सेकंड है आपकी रेंट और रूम रिलीफ, जिसमें आपके पास रेंटल इनकम में से आपने जो रेंटल एक्सपेंसेस लेस कर देने हैं वो फिक्स हैं 7500। सो आपने दोनों वे में कैलकुलेशन करनी है। जिस भी वे आउट में के तहत आपकी इनकम रिड्यूस आ रही है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम ये कंसिडर करें कि आपके पास रेंटल इनकम 10,000 है और रेंटल एक्सपेंसेस 6,000 है। इफ़ रेंटल इनकम इज़ 10,000 and rent expenses are 6,000, then in accordance with first normal assessment 4,000 of your income is assessable as rent a room. Or in case second method is applicable, in that case 10,000 minus 7,500, this is 2,500 of your income that can be assessed. तो इन दोनों में से जो भी लेस है आप वो अडॉप्ट कर लें, वो मेथड के तहत कैलकुलेशन कर लें। यानी यहाँ पे हम 2,500 की इनकम को एज असेसिबल इनकम कंसिडर करेंगे। तो ये वो कंडीशन थी जहाँ पे रेंटल इनकम 10,000 और रेंटल एक्सपेंसेस 6,000 थे। बट अगर कंसिडर करें कि रेंटल इनकम 10,000 और रेंटल एक्सपेंसेस 8,000 है, इन दैट केस
फर्स्ट मेथड के तहत कैलकुलेशन करते हैं या नॉर्मल असेसमेंट के तहत, तो आपके पास 2000 की इनकम आएगी जो असेसबल है। सेकंड मेथड के तहत कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन वही रहेगी 2500। सो इन दिस केस you have to choose this method. This is a more beneficial for you. So you have to consider whatever method shows you lesser income. So this is about property income, and I will share with you the assignment in this regard.